Hello, welcome back to the GradX Academy. The most asked interview question about the imperative method is interviewer will ask you to create the record using the imperative method by LWC component. And there are actually two ways to create the record using LWC component imperative method. First is by using the Apex class and by using the another without using the Apex class. These are the two methods that we have. First method is using the Apex class that we are actually exploring in this video. And another method that is without using the Apex class by using create record function, which is imported from Lightning and UI record API. So that we will discuss in the next video. So first is how we can just create it using the Apex class. So as I drawn here, I have one component. As we all know, we have a target file, template file, and controller file inside the component. We have one Apex class. Apex class has a method, and this method must have the @aura enabled annotation. These are database, right? What we have to do in the template file, we hold the design element. In the target file, we hold the location where our component should be available, and controller we will write for a front end logic. The imperative method will be called inside the controller only. Okay. So first of all, there are a few rules to create the imperative method. First, create the Apex class. This method must be static and it must return something, right? And next is it must have aura enabled. And in this controller, we have to import this Apex class. Okay. So firstly, we will create a design template. So we will have two lightning input box and one button, right? Whatever data we input here into lightning input box, that we can get into one property like this, right? So for example, consider we are creating the account using this LWC component by using imperative method. So what we will do, these are input box. These are input box. ये जो दो input box है, इनका data मुझे एक property में लेना है. So what I will do, I'll create two property. First property I'll create as a ACC name, and second property I'll create as a ACC, let's say city, ACC city. And then I know that by using the event, by using the on change event here, I can get data into ACC name and ACC city. I'll import this particular imperative method. A method directly import कर सकता हूँ मैं यहाँ पे into my component, right? Component में import करूँगा. I will pass this properties as a parameter to this method. ये मेथड को एज अ पैरामीटर मैं ये दो प्रॉपर्टीज पास कर सकता हूँ. व्हाट आई विल डू, फर्स्ट इंपोर्ट दिस मेथड डायरेक्टली. आई विल राइट द मेथड, राइट दिस मेथड. whenever I import this method, ये मेथड एग्जीक्यूट होगा मतलब, राइट, I will get the ACC name and ACC city here into method. I will create a record. यहाँ पे record creation का मैं प्रोग्राम लिखूंगा. create a record पे एक DML यूज करूंगा. That DML will create the record into database and we will get ID in return. वो ID मैं directly यहाँ पे पास करूंगा. वो ID मैं एक particular record ID नाम के पैरामीटर में होल्ड करूंगा. record or rec ID. Okay, and that rec ID I will display here. So like this. Okay, right. The account is created with ID. ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे लिखूंगा. So what I am creating, I'm actually creating one template. Inside that template having some lightning input, उनका value directly properties में store करूंगा. एक particular button. Whenever I click on the button, right, I will call the imperative method. Imperative method will get called, right? After that method has a DML. जो भी मेथड के पैरामीटर होंगे वो मैं यूज करूंगा इनटू अ डीएमएल. डीएमएल हो जाएगा. डीएमएल के बाद आईडी मिलेगा. रिकॉर्ड क्रिएट होगा. दैट आईडी आई विल पास टू द कंट्रोलर एंड देन दैट कंट्रोलर, राइट, जो आईडी क्रिएट हुआ है वो आईडी मैं यहाँ पे टेम्पलेट में डिस्प्ले करूंगा. सो दिस इज माय एंड टू एंड एग्जांपल.
Now what I will do, I will simply open the VS Code. So this is my VS Code, guys, right? So I'll do one thing inside this Force app. I'll create one Lightning component. A component create करूँगा Lightning component. So LWC create Lightning web component. I'll name the component as a LWC component imperative example. Perfect. This is my LWC imperative example. Here in the template जैसे मैंने डिसाइड किया था, I'll create one lightning card. एक lightning card create करता हूँ. ये lightning card को मैं टाइटल दे देता हूँ. टाइटल इक्वल टू imperative method create account. Perfect. I'll save. Right. अभी ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अंदर I will have 3 lightning input. Right. 3 lightning input. पहला lightning input को मैं नाम दूंगा name. Right. So label equal to account name on change. I'll use on change. I'll create one function handle account name change. Okay, ये जो handle account name change है, ये JavaScript फाइल में create करेंगे. Perfect, like this. Okay, perfect. Now same we will do with the phone and city, for phone and city. So I'll create more lightning input label equal to account phone on change, simply handle account phone change. Perfect, right? And I'll create the third one. I'll directly copy this, right? Lightning input मैं यहाँ पे copy कर दूंगा, right? So first is name, phone, and city. I'll change the name of the function. City change. Okay. तो ये जो दो फंक्शन है फोन और सिटी, ये क्रिएटेड नहीं है जावास्क्रिप्ट फाइल में, सो विल क्रिएट. सो हैंडल फोन चेंज. परफेक्ट. एंड हैंडल सिटी चेंज. मैंने क्या किया, 3 इनपुट्स बनाए. 3 इनपुट्स को एक्चुअली 3 फंक्शन से मैप कर दिया ऑन चेंज. ओके. अभी I'll do one thing, right? I'll create 3 properties. मैं 3 properties create करूंगा, right? ACC name, right? अभी ये ACC name में कैसे डेटा आएगा? I'll pass here event. Okay. So this dot ACC name equal to event dot target dot value. Everyone knows कैसे आया ये. What is event dot target dot value? Right? Same I will do for the another phone, right? ACC phone नाम का प्रॉपर्टी बनाऊंगा. ये प्रॉपर्टी में वैल्यू कैसे जाना चाहिए? this dot ACC phone equal to event dot target dot value. Perfect, right? Event यहाँ पे पास करना पड़ेगा. Perfect. राइट, यहाँ पे भी इवेंट पास करते, एक नया प्रॉपर्टी बनाते टू होल्ड द सिटी. ACC सिटी. सो दिस डॉट ACC सिटी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. परफेक्ट, राइट? अभी सारा का सारा डेटा जो इनपुट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो इनपुट का डेटा ऑटोमेटिकली ये 3 प्रॉपर्टीज में आ गया, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? लेट्स मूव बैक टू द रिक्वायरमेंट. मैंने कुछ इनपुट क्रिएट किए, वो इनपुट मैंने एक प्रॉपर्टी में ऐड किए. अभी मुझे क्या क्रिएट करना है? एक बटन.
whenever I click on that button, imperative method should get called. Let's create first button, right? Button create करते हैं. So for that, so here is lightning input के नीचे I'll create one lightning button. So lightning button, right? Label, I'll label it as a create account. Okay, perfect. And on click, on click, I'll create one function, right? Create ACC function. Okay, ये create ACC function कब रन होगा? जब मैं on click करूंगा, मतलब जब मैं क्लिक करूंगा. एक काम करते हैं, right? So here create ACC function. Perfect. Create ACC function हमने रन क्रिएट कर दिया. वो कब रन होना चाहिए? जब we will click on that button. Whenever we click on that button, create ACC function should get called. Okay. अभी ये create ACC function में क्या रन होना चाहिए? एक Apex class. So we do not have any class, so we will create a class. So simply I'll create the Apex class. I'll name it create ACC imperative class. ओके परफेक्ट. एक क्लास क्रिएट हो गया. अभी ये क्लास में एक मेथड क्रिएट करते हैं, राइट? इंपरेटिव, अभी जब भी इंपरेटिव मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं तब ऑरा एनेबल्ड होना चाहिए, मेथड स्टैटिक होना चाहिए, इट मस्ट रिटर्न एनीथिंग. सो पब्लिक पब्लिक परफेक्ट पब्लिक स्टैटिक आईडी पब्लिक स्टैटिक आईडी. ओके क्रिएट ACC. ये जो create ACC एक फंक्शन है, right? It must return what? ID of what? ID of created record. यहाँ पे कुछ string भी होना चाहिए. So string name. एक काम करते हैं, right? Undefined string name, right? String phone and string city. ओके ये तीन पैरामीटर मैंने यहाँ पे ऐड किए. कैसे क्रिएट करते हैं अकाउंट? अकाउंट ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट. परफेक्ट, राइट? ACC डॉट नेम इक्वल टू, ये जो नेम का वैल्यू है वो ACC डॉट फोन इक्वल टू, ये जो फोन का वैल्यू है वो, राइट? ACC डॉट सिटी इक्वल टू, ये जो सिटी का वैल्यू है, बट सिटी ACC में क्या नहीं है? बिलिंग सिटी है. सो बिलिंग सिटी इक्वल टू सिटी. परफेक्ट. रिटर्न व्हाट? ACC. अभी रिटर्न क्या करेगा? आईडी करेगा. कब आईडी रिटर्न होगा? जब भी इंसर्ट ACC. आफ्टर इंसर्टिंग व्हाट वी विल गेट? ACC डॉट ID. परफेक्ट. रिटर्न ACC डॉट ID. व्हाट वी आर रिटर्निंग एक्चुअली ACC का ID. अभी ये सारा का सारा अपेक्स क्लास क्या होना चाहिए? @ और enabled और enabled. ओके परफेक्ट. @ और enabled. ओके अभी और enabled में, राइट? और enabled हो गया, राइट? मेथड इज स्टैटिक, इट इज रिटर्निंग ID. ओके अभी ये जो मेथड है, ये मेथड मुझे जावास्क्रिप्ट फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो इंपोर्ट, राइट? क्रिएट ACC मेथड, राइट? फ्रॉम @salesforce /apex @salesforce /apex the name of the class. I'll copy the name of the class / name of the method. Okay, perfect. राइट? ये जो create ACC मेथड है, ये create ACC मेथड मैं यहाँ पे कॉल करूंगा सिंपली. create ACC मेथड. ओके अभी ये जो create ACC मेथड है, ये create ACC मेथड में क्या पास कर रहे हैं हम लोग?
ultimately we are passing the three parameters, right? Forget about the parameters right now, right? ये जो imperative method है यहाँ पे then में we will get a success and catch में we will get an error. Okay, perfect. Now observe. ये जो create ACC method है, ये create ACC method में कुछ parameters we will pass, right? We will pass some parameters, right? कैसे pass करेंगे parameter? Simple है, right? So यहाँ पे जो parameter है name, right? That I am going to pass from here, right? So name colon ACC name का current value, this dot ACC name, comma, then we have phone colon, this dot ACC phone. Okay, after that city colon, this dot ACC city. मैंने क्या किया, यहाँ से तीन जो वैल्यू आ रही थी, राइट, जो वैल्यू मेरे पास है और डायरेक्टली ये मेथड को पास कर दिया. ओके, आफ्टर दैट राइट वी हियर इन द देन वी विल गेट अ सक्सेस, राइट. सक्सेस मतलब वी विल क्रिएट वन रिजल्ट, राइट. इफ वी गेट द रिजल्ट, अगर हमें रिजल्ट मिला तो क्या हो जाना चाहिए, इफ वी गेट द रिजल्ट वी विल, रिजल्ट मतलब क्या, आईडी स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, राइट, ACC ID. Okay, perfect. So simply, right, this dot ACC ID equal to result में जो भी रिटर्न होगा वो ACC ID में चला गया, right. We will create a error also, error, perfect, right. So I'll add here error, simple, error equal to, or sorry, my bad, right, this dot error I want to do. So this dot error equal to error, perfect, right. मतलब यहाँ पे either ACC आ गया, okay, perfect. Either here we will get ACC ID or error, right. Let me check. @ Salesforce Apex create imperative class, right, and create ACC. Create ACC, create imperative class. Let's deploy this, right? A class को deploy कर देते. So deploy to the org. Perfect. Deploy हो गया class, right? After that, let's save everything first. Let's save everything, right? Save. Perfect. Target set करते हैं. Target is exposed equal to true, right? Then target equal to lightning home page, target equal to lightning record page, target equal to lightning record page. I'll save, right. Let me just deploy this component. A component को deploy करते हैं. Save everything and deploy this component. Okay, just hold. Right. Apex module should have both the class and method name. Right. यहाँ पे class और method name नहीं लिया क्या हमने? Okay, my bad. यहाँ पे slash नहीं चाहिए, यहाँ पे dot चाहिए. Class dot method name. Okay, I'll save. Let me just deploy this source to org. Deployment run successful. Now let's see. So simply I will just click on open default org. मैं open default org करूंगा यहाँ पे. So open default org. Perfectly, it has been opened, right? Open हो गया. Now I will go to account. एक काम करते हैं, अकाउंट पे नहीं, अपॉर्चुनिटीज पे एक्चुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. व्हाई? बिकॉज अपॉर्चुनिटी में we will get the better result, because अकाउंट पे वो कॉन्ट्राडिक्शन कर सकता है. ओके,
So simple, what is the name of the component? मेरे component का नाम था LWC component imperative example. So let's see LWC component imperative example. This is my component. Okay, so I'll save. Right, save. Now after this, now let me just refresh. लेट मी चेक कि अकाउंट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है. एक्चुअली अकाउंट में थोड़ा सा हमने चेंजेस नहीं किए हैं. राइट, एक चीज भी हमसे मिस हो गई है. लेट मी जस्ट ओपन दैट. एक चीज एक्चुअली हमने क्या किया है, यहाँ पे एरर एसीसी में एरर तो हमें मिला है ये अकाउंट. राइट, बट यहाँ पे हमने वो बाइंड नहीं किया. राइट, अकाउंट क्रिएट हुआ वो कैसे समझेगा, इसके लिए वी विल क्रिएट वन टेम्पलेट. राइट, एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे एंड टेम्पलेट में if true में right directly we will call this account ID. परफेक्ट. राइट, और यहाँ पे एक सिंपली एक पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं. द अकाउंट is created with ID dash simply account ID. Account ID. Okay, perfect. Let me save everything. Save किया. Again deploy this source to org. After deployment, let me open. Let me refresh. Let me hard refresh. Okay, now I'll create. Right, concentrate guys. Right, ACS from imperative method. Okay, I will give the phone 55555 city. एक्चुअली सिटी डालने से पहले ही मेरा क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया मैंने, ये मुझे आईडी मिला इन रिटर्न. राइट, लेट्स चेक आईडी को चेक करते. राइट, टीसीएस फ्रॉम इंपरेटिव मेथड. राइट, वंस अगेन एक बार फिर से अपॉर्चुनिटीज में आई एम क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी. राइट, विप्रो 2 एग्जाम्पल imperative. Right, phone number is 22333. Right, city is Pune. I'll click on create account. Automatically, right, मेरे पास ID आ गया. If I move to account, Wipro 22 example imperative is getting created. Okay, so this is how the imperative methods will work while creation of Apex. Okay, so if you have doubt or if you think any confusion doing or creating the account or any record using imperative method, you can drop the comments. In the next video, we are going to learn about how we can do it without using the Apex. Thank you so much.